Hello students, this is the next video on engineering mechanics, and in this video we'll be learning about kinetics. Earlier in the last video we have studied about the kinematics where we dealt with motion without considering the cause of motion, and but in kinetics we deal with motion by considering the cause of motion, which is force. So we deal with motion by considering the cause, which is the force. Okay, so in kinetics also we'll be dealing with four kinds of motions, like we did earlier, starting with the rectilinear, then curvilinear, and then second one is curvilinear, and then rotation, and then plane motion. Okay, so starting with the rectilinear one, I already told you about the rectilinear motion when we are considering the forces. Like we did one question in friction also, जहाँ पर we have used the inertia, or you can say D'Alembert principle or Newton's second law. तो क्या होता है इस केस में? In rectilinear motion, there is, if a block is given and the forces are applied on this block, this is placed on a ground, and the forces are applied, suppose let us say this P force is applied on this block, and the block is in motion, Fx maximum से ज़्यादा है P force, ठीक है? The block is in motion. This is one normal reaction force. This is the weight, which is W, and the acceleration is in this direction. Then when we are talking about kinetics and rectilinear motion, then what happens is summation Fx is equal to 0. We can keep only when we apply a force which is known as inertia force in the direction opposite to that of acceleration, which is given by inertia mass into acceleration. ठीक है, तो जो आप लिखोगे इसको, you can write it as P minus Fx max minus m into a is equal to 0, which is P minus Fx max is equal to m into a, and for second case is summation f of y is equal to 0 to keep this body in equilibrium. ठीक है, summation f of y is equal to 0, which will give you n is equal to W. Okay, these are two conditions which you can apply for a body which is in motion. And now, since the body is in motion, we are and we are considering the force also, which is the cause of motion. So for that, we need to apply inertia force in the direction opposite to that of acceleration to keep the body under equilibrium, right? So this is for rectilinear one. So the next thing is, in fact, the next part is curvilinear motion. Curvilinear के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, whenever we are dealing with curvilinear motion, we have to deal in two directions. So in this case also we'll deal, we take here summation of all the forces acting tangentially and also summation of all the forces acting normally. And since this is tangential acceleration, so opposite to tangential acceleration, we can apply one inertia force to keep the body in equilibrium. Again, since I said कि normal acceleration जो होता है, it will always act towards the center, so it is acting towards the center. So opposite to the normal acceleration, you can apply this inertia force again, and by keeping this as summation all tangential forces is equal to m into at, and summation of all normal forces is equal to m into a n. ठीक है, t here is equal to tangential, जितनी भी फोर्स टेंजेंशियल लग रही है उनको निकालो, ठीक है, एंड देन कीप इट इक्वल टू m into at, so that the final body, the final object will be in equilibrium. Again, all the forces which are acting normally, take the summation of all the normal forces and keep it equal to m into an, like we did in rectilinear motion. ठीक है, rectilinear में भी आपने यही किया था. आपने क्या किया? You have first find the effective force. This is the effective force apart from the inertia force. जो भी resultant force है उसको effective force बोलते हैं. P minus fx max is equal to m into a. ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आपने ma लगा दिया, राइट? एंड दिस इज द इफेक्टिव फोर्स एंड दिस इज द इनर्शिया फोर्स. दिस इज इनर्शिया and P minus Fx max is the effective force. Effective force is the force or the resultant force except the inertia force. Inertia force को हटा के जितना भी बचता है सारी forces का summation, that is equal to effective force. That is known as effective force. Similarly आपने यहाँ पे किया tangential direction में जितनी forces लग रहा था सबका summation निकाला, and then you have added one inertia force in the direction opposite to tangential acceleration, which is m into at, which we did here. ठीक है, and similarly you did in normal direction, and then you keep it equal to 0, and that will provide you the value of body. This is how you can keep the body which is in curvilinear motion under dynamic equilibrium. ठीक है, so the next thing is, there is one question, or you can say a note. You already know the answer of this question. That this is, a stone is
to a string and is whirled in a vertical circle of radius small r, then the tension in the string will be maximum when the stone is at the bottom. दिस इज द आंसर. टेंशन जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जब स्टोन होगा बॉटम पे. केस क्या है कि स्टोन को आपने एक रोप पे स्ट्रिंग पे टाई किया एंड यू आर रोटेटिंग इट. ठीक है, तो एक सर्किल फॉर्म हो गया, ये गिवन है. Right, you need to find the tension is will be maximum at the bottom or the top. Suppose we know the answer as I have written here, it is maximum at the bottom. But why this will be uh, solving, this will be proving by this by these expressions. ठीक है, so when we are talking about the top, at top position tension will be acting downward. Obviously वाला tension तो downward ही लगेगा string पे. अगर tension upward लग जाएगा तो string rotate कैसे करेगा? Right, tension will be act downward. Weight which is mg, it will also act downward. Weight तो downward ही लगता है हमेशा. And this is normal acceleration an will always act towards the center. ठीक है, an तो मैंने बताया था आपको हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा. तो an के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगा दो m into an and you can keep this equal to in dynamic equilibrium. उसके बाद आप इसको टॉप पोजीशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम के उस कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, सो समेशन ऑफ f of y is equal to 0, it will give you minus w. ठीक है, this mg is equal to w in since in downward direction, minus t plus m into an is equal to 0. So यहां से टेंशन निकल के आएगा आपका m into an minus w. This is at the top. When at the bottom, same you have to apply here also. At the bottom w will act downward always. ठीक है, टेंशन यहाँ पर अपवर्ड लगेगा बिकॉज सर्किल कंप्लीट करना है. टेंशन बाहर लगेगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी. राइट, एंड योर an will always act towards center. तो an के अपोजिट क्या लगाओगे आप? इनर्शिया फोर्स टू कीप दिस बॉडी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, m into an again. So when you write summation of forces in y direction is equal to 0, it will give you minus w, then minus m into an, then plus t is equal to 0. So यहाँ से टेंशन निकल के आएगा w plus m into an. Now it is very clear from the two expressions this and this. यहाँ पर w subtract हो रहा है m an से, यहाँ पर w add हो रहा है. So it means this value will be greater, and so the tension in this case, in such case, is maximum at the bottom. Okay, so just learn this thing. Now this is where we have done with the curvilinear motion. Now we'll be dealing with rotation, and in rotation there are two cases. Rotation kinetics. When we are dealing in rotation kinetics, there are two cases. One is centroidal rotation and the other one is non-centroidal rotation. As the name implies, centroidal means when the rotation is taking place about center, and non-centroidal means when the rotation is taking place at any point other than the center. So in this case, we have 2 points, centroidal, non-centroidal. Starting with the centroidal, when the rotation is taking place about some center, which is point O. So in this case, the equation will be summation fx is equal to 0, summation f at y is equal to 0, two equilibrium condition. The third one is summation of moment about point O, क्योंकि center के about rotation हो रहा है. This is equal to I naught into alpha, where alpha is known as angular acceleration and I naught is the moment of inertia about center. ठीक है, इसके लिए हमने पढ़े थे वो mass moment of inertia के formulae about disk and rod and solid cylinder, solid sphere और such. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, whenever you get a question on rotation, rotation पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले थिंग जो है जो आपको पता करनी है, you have to identify that whether the rotation is centroidal or non-centroidal. अगर centroidal है, then this will be the method summation fx is equal to 0, fy is equal to 0, summation of all forces in x direction is equal to 0, summation of all forces in y direction is equal to 0, and summation of all the moments acting at point O. जिस point के about rotation हो रहा है उस point के about moments निकालते हैं. Moments at point O, summation of moments, sum of moments at point O, this is equal to I naught into alpha, and the important point is कि I naught is nothing but the mass moment of inertia about center. ठीक है, तो अगर इसकी आप वैल्यू लिखना चाहो for this case, it will be P into R plus Q into R. This is equal to, suppose if this is a, let us say it is a disk, then this is equal to I naught. I naught क्या होता है डिस्क का सेंटर के अबाउट mr square by 2 into
अल्फा. Most of the time they'll ask you to find the value of this अल्फा. ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी होगी कई बार क्वेश्चन में, राइट? तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इज इन calculating the values of angular acceleration when the rotation is centroidal. On the other hand, when the rotation is non-centroidal, here the rotation is taking place. Rotation is taking place about point A, which is non-centroidal. Center के about rotate कर नहीं रही rod, right? So in this case, what you can do is you have to find the reaction will remain same. Summation of forces in x direction is equal to 0. Summation of forces in y direction is equal to 0. But the only difference is summation of moment at point A will be equal to I at A into alpha. ठीक है, I at A into alpha, where this is the moments. ये मोमेंट निकालते हैं अबाउट दोज पॉइंट्स, मोमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा होता है, अबाउट पॉइंट ए. दिस इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ए, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है सेंटरॉइडल और नॉन सेंटरॉइडल में? द ओनली डिफरेंस इन दिस लास्ट इक्वेशन. ठीक है, जिस जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट हो रहा हो उस पॉइंट पे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ the summation of all moments. You have to calculate moments at that point and you have to calculate the value of mass moment of inertia at that point. Suppose in this case IA की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? रॉड का सेंटर के अबाउट क्या होता है? ml square by 12 रॉड का, राइट? वी हैव स्टडीड अबाउट सेंटर एंड अबाउट वन एंड क्या था? ml square by 3 about one end. So here we'll be using this value ml square by 3. ये फॉर्मूले में ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ. ml square by वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले वीडियो में ऑलरेडी हैव गिवन दीस वैल्यूज. ठीक है, ml square by 3. so this is the change, right? अगर ये सेंट्रोइडल होता, दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर, तो यहाँ पर आई नॉट हो जाता. सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट और जो आई नॉट की वैल्यू है इट विल बी ml square by 12. ठीक है, this is the change which you need to understand while you are solving questions based on rotation. Okay, in fact let us take one example on rotation so that this becomes clear to you what we are doing, how we used to solve questions on rotation. So this is a question in which a uniform rod rigid bar of mass small m and length L is hinged at one end as shown in the figure. This is the point of hinge, this is the hinge point, and the question given is a force P is applied at a distance of 2L by 3 from the hinge point so that the rod swings to the right. इस force के application की वजह से rod जो है right की तरफ right direction में swing हो गई. So you have to find the value of alpha. ठीक है, first of all the rotation is taking place about center or about some non-centroidal point. Obviously this is नॉन सेंट्रोइडल, सेंटर के अबाउट तो रोटेशन हो नहीं रहा, राइट? इस पॉइंट के अबाउट हो रहा होता, सेंटर के अबाउट. अगर इस पॉइंट के अबाउट हो रहा था देन वी कैन से दैट द मोस्ट रोटेशन इज अबाउट सेंटर, बट ये तो इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, सो इट विल बी नॉन सेंट्रोइडल. So in non-centroidal case, what will be the difference? Summation of all the moments at point, let us say this is point A, is equal to moment of inertia at A into alpha. So summation of all moments will be only due to P into 2L by 3, और कोई फोर्स तो लगनी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, P इंटू 2L by 3 इज इक्वल टू I एट A. एट एंड पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml square by 3 into alpha. The 3 will get cancel out, this L will get cancel out, and your alpha will be 2P divided by m into L, and this is your final answer. This is how you can calculate the value of angular acceleration of different questions. और अगर आपसे forces पूछी हैं, then just have to add few applications, few equations which are summation of forces in x direction is equal to 0, summation of forces in y direction is equal to 0, और उससे आप सारी forces अगर पूछी होंगी तो उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो. ठीक है, now we are done with rotation, and the last kind of motion which we discussed is plane motion. So this is what is we need to study in plane motion kinetics. Here we need to consider translation and rotation both when we are treating as plane motion independently. ठीक है, जब आप plane motion को plane motion की तरह ही treat कर रहे हो, then what we can do is while writing the equations or kinetic equations to keep the body in dynamic equilibrium, what you have to do is you have to take summation of all forces in x direction is equal to m into a at a, acceleration at a. This is where you are considering ट्रांसलेशन एंड देन समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो. ये तो जीरो, यही इक्वेशन रहेगी, इट विल रिमेन सेम. एंड द थर्ड इक्वेशन वेयर you have to consider rotation since we are talking about plane motion,
तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। इस केस में समेशन m एट a इज इक्वल टू I एट a इंटू अल्फा इफ इस पॉइंट के अबाउट a पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है, a पॉइंट के अबाउट ही रोटेशन हो रहा है। अगर आप प्लेन मोशन को कंसीडर कर रहे हो तो ट्रांसलेशन के लिए m इंटू एक्सेलरेशन एट पॉइंट a, एंड फॉर रोटेशन ऑल्सो यू हैव टू कंसीडर दैट रोटेशन इज टेकिंग प्लेस अबाउट सेंटर, क्योंकि यहाँ पर आप रोटेशन को सेपरेटली कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स एट पॉइंट a and keep it equal to moment of inertia at point A into angular acceleration, and this is how you can calculate the value of all the unknowns whether it is required, and it is said कि the body जो है वो आपकी equilibrium में है, ठीक है। On the other hand, we already discussed that plane motion problem can be converted into pure rotation with respect to आई सेंटर, राइट। तो अगर आप आई सेंटर की बात कर रहे होगे करोगे देन अबाउट आई सेंटर योर इक्वेशन चेंजेस एंड इट बिकम्स your equations the changes, and the major change in the equation is कि भाई अब आप आई सेंटर के अबाउट बात कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज दिस इज द व्हील, दिस इज द व्हील एंड दिस इज रोटेटिंग ऑन अ प्लेन ग्राउंड, तो इसका आई सेंटर कहाँ पे होगा? आई सेंटर विल ऑलवेज लाई एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा। इट मींस कि ये जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट से ये कंप्लीट प्लेन मोशन जो है इट इज लुकिंग लाइक अ प्योर रोटेशन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, तो सी पॉइंट से हमें प्लेन मोशन में ट्रांसलेशन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम सी पॉइंट से डील करेंगे, द ओनली थिंग विच वी नीड टू डू इज summation of all moments at point C, which is the I center, is equal to I at C into alpha, where I at C is moment of inertia about I center जो कि यहाँ पे C point है, ठीक है, and this is summation of all moments about point सी और आई सेंटर, ठीक है। तो जब आप आई सेंटर से बात करोगे, जो कि आपको करना है, यू फॉर एवरी प्लेन मोशन प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग आई सेंटर ओनली। आई सेंटर से ही सॉल्व करोगे तभी इजीली हो पाएगी सॉल्व, ठीक है। बिकॉज वी कैनॉट वी डोंट हैव वैल्यूज ऑफ दिस एक्सेलरेशन एवरी टाइम इन द क्वेश्चन। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कन्वर्ट द प्लेन मोशन प्रॉब्लम इनटू प्योर रोटेशन, एंड देन बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन मेजरली विच इज एवरी टाइम यू कैन से एंगुलर एक्सेलरेशन। ज्यादातर टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन ही आपसे पूछा होगा, right? So this is how we can solve questions on plane motion kinetics. Let us take one question so that this become a bit more clear to you how we'll apply, how we'll convert the plane motion problem into pure rotation. In fact, let us take two examples on this क्योंकि थोड़ा सा important part है और कभी-कभी confusion हो जाता है इसमें। Here, since a wheel is given, so wheel का मतलब तो ये हुआ ना कि wheel तो plane motion ही करेगा, right? Wheel always do plane motion. Second important thing is whenever wheel is given और wheel के अलावा कुछ भी mention नहीं है, then consider wheel as डिस्क। जब क्वेश्चन में केवल व्हील लिखा हो और कुछ भी मेंशन ना हो, ठीक है, तो व्हील को डिस्क कंसीडर करना, राइट। सो इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द फिगर गिवन वेयर एप्लीकेट p is applied, which is the value of p is 400 न्यूटन, this is weight w 100 न्यूटन, this is 2 मीटर रेडियस, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए की वैल्यू तो दी नहीं है, ठीक है, तो प्लेन मोशन को अगर आप यूज करोगे तो आपको इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद देन यू हैव टू फाइंड द अल्फा, ठीक है। बट वी कैन कन्वर्ट प्लेन मोशन टू प्योर रोटेशन वेरी इजिली विद रिस्पेक्ट टू आई सेंटर। इसमें आई सेंटर कहाँ पर होगा? आई सेंटर होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू आई सेंटर वी हैव समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स एट सी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सी इनटू अल्फा, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ सी किसकी वजह से आएगा? मोमेंट, मोमेंट आएगा इस p इज इक्वल टू 400 की वजह से। क्या आएगा? 400 इनटू व्हाट विल बी द वैल्यू? दिस इज 2, दिस इज 2 इनटू 4 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको सी पॉइंट के अबाउट। नाउ वी आर कंसीडरिंग व्हील एज डिस्क, तो आई एट ए पे क्या होगा? वी नो एम आर स्क्वायर बाय 2, सेंटर पे तो पता है आपको, ठीक है। अब आई एट सी पे निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई पैरेलल थ्योरम व्हिच इज आई एट ए प्लस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस which is h, and this is nothing but equal to radius only, रेडियस ही तो है ये डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस रेडियस ही तो है, राइट। सो m इंटू एच स्क्वायर, और h यहाँ पे r के इक्वल ही होगा। सो आई एट a इज एम आर स्क्वायर बाई 2
plus m into h square, which is r only, r square. ठीक है, so this complete will become 3 by 2 m r square. 3 by 2 mr square will be the final value of moment of inertia. ठीक है, 3 by 2 mr square कैसे निकाला मैंने? दिस इज अ सर्किल, इस पॉइंट पे पता है आपको mr square by 2 है, ठीक है, इस पॉइंट पे चाहिए आपको, तो कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया by applying parallax theorem, this plus, since we are talking about mass moment of inertia, so plus mass into distance between two axes square. Distance between two axes कितना है यहाँ पे? r ही है, क्योंकि डिस्क है ना, so m into r square, so this will be 3 by 2 mr square. तो यहाँ पे लगा दो 3 by 2 m की वैल्यू कैसे निकालोगे? वेट इज गिवन 100, तो m will be 100 divided by 9.81, 9.81 m into r square. R कितना है? 2, so 2 square will be 4 into alpha. So from here you'll get a value of alpha is equal to 26.16 radian per second square. This is how you can calculate the value of alpha for a plane motion problem. ठीक है, what you have to do is you just have to calculate, you just have to find the moment of inertia about uh, instantaneous center, and just have to keep this formula to find the value of unknown, which is angular acceleration. Let us take one more example on the same concept. So this is a question given where a wheel is given and the mass of wheel is small m and the radius of gyration is given. अब मैंने आपको बताया जब wheel given हो और कुछ भी mention ना हो, then you have to consider wheel as disk, but यहाँ पर तो radius of gyration दिया हुआ है, तो you have to use general formula for moment of inertia, which is equal to m k square. ठीक है, I about center is basically equal to mk square is the general formula. ठीक है, now there is one more thing given is rolling down is shown. Rolling down मतलब roll भी हो रहा है और नीचे भी जा रहा है, it means कि rotation भी और translation भी. So this is in plane motion, you have to find the linear acceleration of the wheel. a की वैल्यू निकाल ली है, but a is equal to r into alpha होता है, तो उसके लिए पहले आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू इज व्हाट the main method which we already studied कि भाई प्लेन मोशन की प्रॉब्लम है उसको कंसीडर करो प्योर रोटेशन में. कैसे करोगे? प्लेन अबाउट द आई सेंटर, तो आई सेंटर क्या होगा यहाँ पे? पॉइंट सी. ठीक है, आई सेंटर क्या होगा? द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो सी पॉइंट इज द आई सेंटर. सो what you have to do is प्लेन मोशन प्रॉब्लम को आई सेंटर के अबाउट यू कैन कन्वर्ट इनटू प्योर रोटेशन प्रॉब्लम लाइक दिस. ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स एट पॉइंट सी आपको निकालना है. ठीक है, सपोज यहाँ टेंशन लग भी रहा है, तो टेंशन की वजह से कोई मोमेंट सी पॉइंट पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है. तो ओनली मोमेंट विच विल बी एक्टिंग इज mg into r is equal to मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यहाँ पे? mk स्क्वायर. अब इस पे आपको पता है mk स्क्वायर है सेंटर पे, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है. देन अप्लाई पैरेलल थ्योरम, mk स्क्वायर which is moment of inertia about center plus mass into distance between two axes का square which is r only, so mr square into alpha. So from here you'll get m will get cancel out, you'll get alpha is equal to g into r divided by k square plus r square. This is alpha, but you need to find the value of linear acceleration, so a will be equal to r into alpha. R into alpha, इससे r को multiply करो, it will be gr square divided by r square plus k square. K square, this will be your final answer. ठीक है, this is how you can calculate the value. Okay, so what we did is, we since we know this is a plane motion problem, so we have converted this plane motion into pure rotation with respect to eye center. Eye center क्या है? The point of contact. अगर ऐसे आपको क्लियर नहीं हो रहा तो इस तरीके से समझ लो, इस पूरे फिगर को रिवर्स कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो. ठीक है, दिस लेट अस मेक दिस फिगर हॉरिजॉन्टल. तो क्या होगा? ये पॉइंट सी है यहाँ पे, ठीक है, ये दिस इज टेंशन एक्टिंग. ठीक है, तो व्हील जो है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सी हुआ ना, तो आई सेंटर तो सी होगा, राइट? आई सेंटर फॉर अ व्हील रोटेटिंग और रोलिंग डाउन विल ऑलवेज लाइज एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस आई सेंटर के अबाउट वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज, सो दैट बिकॉज वी नीड टू कन्वर्ट प्लेन मोशन इनटू प्योर रोटेशन problem. ठीक है, so this is how we can solve questions on plane motion kinetics. Now moving on to the next kind of method, or you can say the completely next topic, new topic, which is work energy method. Work energy
method. Now before we start this, the very important part is कि भाई ये कैसे समझना है कि when to use which method. ठीक है, तो वर्क एनर्जी मेथड कब यूज करना है उसके लिए एक सिंपल सा नोट है. ठीक है, दिस मेथड इज अप्लाइड इफ force, velocity, displacements आर इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम. कोई भी क्वेश्चन है जिसमें फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, आर इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम विदाउट एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन नहीं दिया है. ठीक है, सो फॉर क्वेश्चंस इन विच force is given, velocity is given, displacements are given, but acceleration is not given, then this indicates that it is a work energy problem. It is a work energy प्रॉब्लम. ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको वर्क एनर्जी मेथड से यूज करना है. द वेरी सिंपल थिंग इज यू जस्ट हैव टू नोट डाउन कि भाई क्वेश्चन में फोर्स की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट्स की बात हो रही है, बट कहीं पर भी एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है. ठीक है, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये वर्क एनर्जी मेथड का प्रॉब्लम है. राइट, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा तो लास्ट विच वी हैव स्टडीड द काइनेटिक्स प्रॉब्लम, तो वो काइनेटिक्स का हो जाएगा. ठीक है, सो अगेन इन दिस आल्सो विल बी स्टडिंग the four kind of motion: rectilinear motion and curvilinear one, and also rotation, and last one is plane motion. ठीक है, तो वर्क एनर्जी मेथड में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन, द थिंग इज, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि भाई जो रिजल्टेंट वर्क डन होगा आपका, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन में व्हेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द ओनली एनर्जी व्हिच एग्जिस्ट इज द काइनेटिक एनर्जी. सो योर रिजल्टेंट वर्क डन r dot ds, or in fact in place of r take f dot ds, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना वर्क डन आपका, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वही मिलेगा. इट विल बी इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 square, which is change in kinetic energy. Same when we are talking about curvilinear motion, तो क्या होता है, will be, अब हम बात तो यहाँ पे curvilinear में भी रेक्टिलिनियर की ही कर रहे हैं. ठीक है, curvilinear में डिफरेंस क्या हो जाता है, the only difference is कि will deal in two directions. तो यहाँ पर your resultant work done is equal to half m vx square minus v naught x square plus half m वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर. यहाँ पे एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डील करना पड़ेगा. ठीक है, व्हेन वी कम्स टू रोटेशन, हियर द रिजल्टेंट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्या फॉर्मूला होता है उसका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर. ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. एंड अगेन योर रिजल्टेंट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर. ठीक है, नाउ विद द लास्ट प्लेन मोशन की अगर आप बात करोगे, देन अगेन प्लेन मोशन में क्या कंसीडर करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू कंसीडर बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. So resultant work done in this case is half m v2 square minus v1 square plus half आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. यहाँ पे ट्रांसलेशन कंसीडर कर लिया आपने, एंड बाय दिस यू हैव कंसीडर्ड रोटेशन आल्सो. ठीक है, बट any plane motion problem can be converted into pure rotation with respect to I center. ठीक है, तो प्लेन मोशन जो है उसको आप प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू आई सेंटर, तो आपका रिजल्टेंट वर्क डन जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. जहां पे आई सी जो हो जाएगा, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई सेंटर. तो इस केस में यू डोंट हैव टू रिजल्टेंट वर्क डन जो है यहाँ पे, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी फॉर ट्रांसलेशन, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन एनर्जी इन रोटेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आई सेंटर. चेंज क्या आएगा,
यहाँ पे आई है, दिस इज आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसलेशन को भी कंसीडर कर रहे हैं, बट सिंस here we are talking about only pure rotation with respect to eye center, so what we do is half IC, which is moment of inertia about eye center, omega square minus omega naught square. ये फायदा होता है हमारा आई सेंटर का कि आपको ट्रांसलेशन को कंसीडर करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी विल डू वन क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो, बट बिफोर दैट लेट अस स्टडी हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग. तो स्प्रिंग फोर्स क्या होती है आपको पता है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू k into x, where k is the stiffness or spring constant and x is the deflection. ठीक है, कितना डिफ्लेक्ट हुई है स्प्रिंग, राइट, और यू कैन से elongation. ठीक है, फॉर अ स्प्रिंग लेट अस से दिस इज अ स्प्रिंग, this is the free length of the spring, this is a free length, this is with spring of stiffness k, then on application of force अगर ये इतना आगे बढ़ गई, इट मींस फ्रॉम इट्स फ्री लेंथ दिस इज नोन एज x, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स f, सो f इज इक्वल टू k इंटू x, ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन, राइट. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज बेसिकली इक्वल टू, इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड इज इक्वल टू हाफ k x2 स्क्वायर माइनस हाफ k x1 स्क्वायर. तो चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ जनरल टर्म्स में, हाफ के एक्स स्क्वायर, और किधर से आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर आता है यहां से. फॉर अ लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, लोड इज दिस, लेट अस से p इज द लोड, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, इस तरीके से कर्व बनता है ये, ठीक है, इसका इसमें p, दिस इज p, ठीक है, एंड दिस इज से x. सो एरिया ऑफ दिस कर्व, एरिया ऑफ load versus deflection curve, it gives the work done by spring. लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व का जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है स्प्रिंग का, तो निकालो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट विच इज p, so half into x, we all know the spring force is nothing but kx, so half kx square, ठीक है, this is known as spring potential एनर्जी, ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो कि भाई रिजल्टेंट वर्क डन जो जो होगा, रिजल्टेंट वर्क डन is nothing but the change in energy, so resultant work done by spring is equal to change in spring potential energy, which is half k x2 square minus half k x1 square. अब x2 x1 x2 क्या है यहाँ पे, x1 x2 are the two deflections on application of force. suppose ये एक free length की spring है, ठीक है, this is L which is the free length, then on application of force this free length get elongated by this much, yeah, this is let us say x1, then again on application of force this further get elongated by this much, so this is what is known as x2, and so half k x2 square minus half k x1 square will give you the resultant work done by spring, ठीक है. This is how you can calculate the values of work done or potential energy of a spring. Now let us take one question on the same concept of resultant work done. So this is a question given in which a rope is wound round a cylinder. एक rope जो है cylinder के about बांधा हुआ है आपने, जैसे as shown in the figure, this is radius r, ठीक है. You have to find the linear velocity after it has dropped by h meters. अब पहली बात तो ये है कि सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया था, इट इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाय 2 अबाउट सेंटर सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इन आवर वीडियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकंड थिंग इज कि ये जो सिलेंडर है इट इज रोलिंग डाउन एंड इट इज मूविंग आल्सो, तो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्लेन मोशन. क्यों, क्योंकि सिलेंडर आपका रोल भी हो रहा है और नीचे भी आ रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है. इट हैज ड्रॉप्ड बाय एच मीटर्स, रोलिंग डाउन भी हो रहा है, रोल होते होते नीचे आ गया, दैट मींस रोटेशन एंड ट्रांसलेशन बोथ, बट वी कैन कन्वर्ट प्लेन मोशन इनटू pure rotation with respect to eye center. What is the eye center here, the point of contact which is c,
So that is with respect to I center, and what is I center? I center is point C. तो जब आप I center की भी एक बात करोगे, अब आप इसमें देखो, इसमें आपसे वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की भी बात हो रही है, बट यहां पर कहीं पर भी एक्सेलरेशन नहीं दिया है. सो इट मींस वी शुड अप्लाई वर्क एनर्जी मेथड एयर, ठीक है. और वर्क एनर्जी मेथड क्या है हमारा? फॉर प्योर रोटेशन वी हैव रिजल्टेंट वर्क डन is equal to half IC, where IC is the moment of inertia about I center, omega square minus omega naught square, ठीक है. रिजल्टेंट वर्क डन क्या है? रिजल्टेंट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ पे? W. डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे डायरेक्शन में. सो W इंटू एच इज इक्वल टू हाफ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? एम आर स्क्वायर बाय टू. सेंटर पे पता है एम आर स्क्वायर बाय टू. इस पॉइंट पर चाहिए आपको, ठीक है. सो एम आर स्क्वायर बाय टू plus m into distance between the two axes square, which is nothing but r only, r square. Okay, this is how you can calculate, into omega square minus omega naught square. Omega naught square will be 0, so it will be omega square minus 0, ठीक है, क्योंकि initially it is at rest or it released, ये जो लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है. then it is dropped by h meters, कि पहले नहीं था, उस पॉइंट पे 0 थी उसकी velocity, then it is dropped by h meters, ठीक है. so from here it will be w into h is equal to half into 3 by 2 mr square into omega square, ठीक है. so from here you will get the value of omega is equal to 2 divided by r under root gh by 3. बट क्वेश्चन में आपसे ओमेगा नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी v is equal to r into omega, so r into 2 by r under root gh by 3. This r will get cancelled out, so your final answer will be 2 root gh by 3. This is your final answer, and this is how, with the application of this work energy method, you can very easily find the values of the unknowns which have been asked in the क्वेश्चन, ठीक है. तो क्या किया हमने? प्लेन मोशन का प्रॉब्लम था, वी हैव कन्वर्टेड दिस प्लेन मोशन इनटू प्योर रोटेशन वन विद रिस्पेक्ट टू आई सेंटर, विच इज इन दिस केस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी डीलिंग विद रॉड या फिर डिस्क, ठीक है. दोनों ही केस में, रॉड के केस में तो भाई से आपको पता है ये एंड पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml² by 3, ठीक है, या जब जहां पर भी आपका आई सेंटर आ रहा है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क or wheel or any kind of cylinder which is executing a plane motion, then its point of contact will be the instantaneous center, ठीक है. And now the next topic is the impulse momentum method, and for this method also we'll be discussing all the four kinds of motion, which is starting with the rectilinear, then curvilinear, then rotation, and at last we'll be discussing plane मोशन, ठीक है. रेक्टिलिनियर की बात करते हैं आप, तो व्हाट विल बी एक्टिंग? इम्पल्स, बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम जो होता है हमारा, m into v minus m into u, this is nothing but equal to impulse, and this impulse is given by integration of f dot dt, ठीक है. this is known as change in linear momentum. This is impulse as given, as I have given force into time, force into total time, this will give you impulse, ठीक है. and linear momentum का अगर simple formula देखा जाए, तो it is given by m into v, ये हम सबको पता है. तो when we are talking about rectilinear motion or a straight line motion, then uh, the change in linear momentum is nothing but equal to integration of f dot dt, which is nothing but impulse, or you can say, since we are talking about rectilinear, so it is linear impulse. And when we are talking about the curvilinear motion, so again the same thing which we need to do is summation of forces in x direction into dt is equal to m into vx minus ux, and summation of forces in y direction dt is equal to m into vy minus uy. So basically you have to write the same formula which you have written in rectilinear motion but in both the directions. Point is कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशन. रोटेशन में हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होता है, दैट इज गिवन बाय एंगुलर मोमेंटम is equal to I into omega, and angular impulse, which is given by integration of m dot d theta, is equal to change in angular momentum, which is I omega minus
ओमेगा नॉट, ठीक है। I ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दिस इज नोन एज चेंज इन एंगुलर momentum. This is equal to integration of m dot d theta, which is the angular, this is basically the angular impulse, right? And the last one is the plane motion. Plane motion में क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, बट plane motion can be converted into pure rotation with respect to I center, ठीक है। So what is the change? The change is any plane motion problem can be written like integration of summation m at point C dot d theta, or so, dt basically. It will not be d theta, it will be dt m dot. In fact, oh, here also it will be dt, it will not be d theta, it will be dt. This is whenever we are talking about impulse, we have to talk about the moment and time, and when we are talking about the rectilinear one, then it will be force and time, ठीक है। तो force और time की जब भी बात हो रही हो, ठीक है, I'll let you just इसके बाद मैं एक नोट भी लिखवा देता हूँ आपको। This is summation of all moment at point C. Suppose I center C point पर है, dt, and this is equal to IC into omega minus omega naught, ठीक है। तो जब भी plane motion की बात हो रही हो, right? So instead of writing the equations separately for translation and rotation, what you can do is just find all the moments or the angular impulse at point C, which is instantaneous center, and equate it to this particular value, which is the change in angular momentum. Here the only difference is कि moment of inertia जो आएगा वो आपका instantaneous center पर आएगा instead of the center, ठीक है। तो IC जो है यहाँ पे, it is the moment of inertia about I center. Okay, this is the value of moment of inertia. तो point is कि भाई कब यूज करेंगे impulse momentum method? तो इसके लिए भी एक नोट है, जब फोर्स, टाइम, ठीक है, या फिर मोमेंट और टाइम की बात हो रही है, ठीक है, एंड वेलोसिटीज आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। सो जब आपको ऐसी कोई भी वैल्यू दिख रही है जिसमें फोर्स दिया है, टाइम दिया है, या फिर मोमेंट दिया है, टाइम दिया है, और वेलोसिटीज की बात हो रही है, देन द ओनली थिंग, द मेथड विच कैन बी यूज्ड इज इम्पल्स मोमेंटम मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ भी दिखे, देन यूज दिस मेथड टू फाइंड द फाइनल वैल्यू। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑन दिस। So this is a question in which a block of mass 1 kg is given and it is moving with a velocity of 2 meters per second. It is subjected to a force capital F, variation of which is shown in the graph. ठीक है, you have to find the velocity of the block which it attained after 10 seconds. तो आप clearly इसको identify कर सकते हो, forces दिए, ठीक है, टाइम दिया है और वेलोसिटीज की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने बोला जब भी फोर्स दिया हो, टाइम दिया हो, वेलोसिटी की बात हो रही हो, व्हाट वी कैन अप्लाई इज वी कैन अप्लाई impulse momentum method, and since it is a rectilinear motion problem, so integration of f dot dt is equal to change in angular momentum, यही पढ़ा है हमने अभी पीछे मेथड में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f dot dt कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन ऑफ f dot dt is nothing but the area of the graph, which is equal to 10 into 5. For this, the area of this is 10 into 5, plus for area of rectangle it will be half into 10 minus 5, 5 into 10, ठीक है। So it will be a triangle, so half base into height. This is equal to mass, which is given 1 kg here, into velocity v minus u. V you have to calculate, u is given in the question as 2, so it will be equal to, this is nothing but 75 is equal to v minus 2, so v is equal to 77 meter per second. This is how, by applying impulse momentum method, you can very easily get your final आंसर, ठीक है। तो व्हाट द पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई क्वेश्चन जब आपको दिखे तो समझ में आए कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने का सिंपल तरीके मैंने आपको पहले ही बताया, अगर फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट्स की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन नहीं है, तो इट मींस यू हैव टू यूज वर्क एनर्जी मेथड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया है ना। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो, और फोर्स भी दिया है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल प्रोवाइड यू द वर्क डन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर फोर्स और टाइम की बात हो रही है और वेलोसिटी पूछा हुआ है, या वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, देन फोर्स और टाइम की जब भी बात होगी, वी ऑलवेज अप्लाई इंपल्स मोमेंटम मेथड, क्योंकि फोर्स और टाइम कंबाइन करके द ओनली थिंग वी कैन फॉर्म इज impulse, ठीक है। So what for that you can apply impulse momentum method. Now the next thing which we need to discuss is the law of conservation of linear momentum.
This is the law of conservation of linear momentum in which a body of mass m1 is colliding with a body of mass m2, and after collision they are moving with velocities of v1 dash and v2 dash. Then as per the conservation of linear momentum, we have linear momentum before impact equal to linear momentum after impact. m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash, and the same will be applying with angular momentum also. I1 omega 1 plus I2 omega 2 is equal to I1 omega dash plus I2 omega dash. The important point is ये ज़्यादा use नहीं होता angular momentum वाला, but this is very important and we use it in, it is applicable in all the cases, in all cases, चाहे collision आपका elastic हो या inelastic हो, ठीक है, conservation of momentum is applicable in both the cases, unlike conservation of energy which is applicable only to elastic case. ठीक है, so next what we'll be discussing is law of conservation of energy. Next we'll be discussing law of conservation of energy. The important point is this law is applicable to elastic, or you can say perfectly elastic collisions only. Perfectly elastic collisions only, ठीक है, it is not, it cannot be applied to inelastic collision. Inelastic collision में ये apply नहीं कर सकते, ठीक है, and as per this law, what is half m1 v1 square plus half m2 v2 square is equal to half m1 v1 dash square plus half m2 v2 dash square, which is the energy before impact, which is equal to the energy after impact. Okay, this is the law of conservation of energy. अब आप एक बात बताओ मुझे, this is suppose body of m1 moving with velocity v1, this is body of mass m2 moving velocity v2, and after collision this is body m1, this is body m2 moving with v1 dash and this is moving with v2 dash. नहीं, ठीक है, the point is कि impact होने के लिए, for इम्पैक्ट टू हैपन, ये दोनों बॉडी m1 और m2 है, इनका इम्पैक्ट हो, उसके लिए कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली v1 मस्ट बी ग्रेटर देन v2, ठीक है, अब ये ज्यादा होगी तभी तो इसे टकरा पाएगी, नहीं तो ये ज्यादा होगी तो भाग जाएगी ना आगे, राइट? सिमिलरली आफ्टर इम्पैक्ट, फॉर सेपरेशन टू अकर, सेपरेशन होने के लिए v2 डैश मस्ट बी ग्रेटर देन v1 डैश, तभी तो दोनों बॉडीज अलग होंगी, राइट? v2 डैश v1 डैश से ज्यादा होनी चाहिए तभी दोनों बॉडीज सेपरेट हो पाएंगी, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, और मैंने क्यों बताया इसकी बात जस्ट अभी होगी नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज द टॉपिक ऑफ इम्पैक्ट, एंड अंडर दिस टॉपिक द फर्स्ट सब हेडिंग इज कोफिशिएंट ऑफ restitution, coefficient of restitution, which is given by E, and the formula for coefficient of restitution is nothing but V2 dash minus V1 dash divided by V1 minus V2, ठीक है? अब इस फॉर्मूले को किसी ने भी ध्यान से नहीं देखा. एज आई सेड, V2 डैश माइनस V1 डैश डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2, ठीक है? क्यों V1 माइनस V2? बिकॉज V1 इज ग्रेटर देन V2 फॉर इम्पैक्ट टू हैपन, अभी पढ़ा हमने, एंड V2 डैश इज ग्रेटर देन V1 डैश फॉर सेपरेशन टू अकर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, V1 माइनस V2 ही लिखना नीचे, ओके? दिस इज ऑल्सो कैन बी रिलेटेड एज रिलेटिव वेलोसिटीज after impact divided by the relative velocities before impact, also given as velocity of separation divided by the velocity of approach. Velocity of separation divided by the velocity of approach. So by using these formulae, you can calculate the value of coefficient of restitution. Okay. Now next topic in this is the perfectly elastic bodies. Perfectly elastic bodies. पहली बात, law of conservation of energy is applied. Conservation of energy is applied here.
applicable. ओके, फर्स्ट थिंग दैट इज बोथ एनर्जी एंड ऑल्सो मैंने बोला था मोमेंटम तो हर जगह एप्लीकेबल है, बोथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आर एप्लीकेबल इन दिस केस, ठीक है। और व्हाट हैपेंस इन परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, अगर बॉडी का मास सेम है, दोनों बॉडीज का मास सेम है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, this is moving with velocity v2 in this direction, this is moving with velocity v1 in this direction, then impact के बाद what happen is the first thing is कि bodies will change the velocities, the body will exchange the velocities, velocities को exchange कर देती है, कैसे, जो v1 dash है this will become v2 और जो v2 dash है this will become v1, but they'll move in the same direction as they are moving earlier. v1 पहले की तरफ मूव कर रही थी in towards right, so यहाँ पर भी right मूव करेगी, v2 पहले की तरफ मूव कर रही थी towards left, तो यहाँ पर भी लेफ्ट मूव करेगी, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज में क्या होता है, दो पॉइंट्स, पहली बात बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, राइट। सेकेंड थिंग कि अगर मासेस सेम है बॉडी के एंड दे आर अंडर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज, तो v1 डैश जो हो जाएगी वो v2 के इक्वल हो जाएगी और v2 डैश जो है वो v1 के इक्वल हो जाएगी, राइट। बट देयर डायरेक्शन रिमेन सेम, तो v1 का पहला डायरेक्शन था ये, ठीक है। अब v1 किसके इक्वल है, v1 इक्वल है v2 के, तो v1 का डायरेक्शन अभी भी सेम ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस v2 डायरेक्शन ऑफ v2 विल रिमेन सेम, ये डायरेक्शन v2 का है, right? This is after collision when the masses are same. पर ये तभी होगा when masses are same. When masses are same, velocities get exchanged and the direction will be same as the earlier, right? There's one more thing, coefficient of restriction की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, v2 dash minus v1 dash divided by v1 minus v2, तो v2 dash की वैल्यू क्या है यहाँ पे v1, v1 dash की वैल्यू क्या है v2 divided by v1 minus v2, this is equal to 1. So E is equal to 1 in case of perfectly elastic bodies, ठीक है। Moving on to the next one, which is perfectly inelastic bodies, perfectly inelastic bodies. Here the case is the kinetic energy is not conserved, पहला केस तो ये हो गया। दूसरी बात, only momentum is conserved, second thing, and third point is when the two bodies of same mass is m and m, where one is moving with velocity v1 and the other is stationary or having a velocity 0, then after collision what happens, these two bodies will combine together and move as single body with one single velocity which is v, ठीक है। तो क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज में, अगर मासेस सेम है और एक बॉडी जो है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, it will combine with and the second body is stationary, it is not moving, then after collision what happens, the two bodies will stick together, two bodies will stick together and move together with one single velocity, ठीक है। stick together and move together with one single velocity, यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी, E will be equal to v2 dash minus v1 dash divided by v1 minus v2, v2 dash और v1 dash तो सेम है यहाँ पे, v minus v क्योंकि दोनों सिंगल एक वेलोसिटी मूव कर रही है, डिवाइड बाय v1 minus 0, तो दिस इज 0, so it will be equal to 0, so E की वैल्यू होगी इस केस में 0, राइट। सो नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब भी क्वेश्चन आता है कोई भी परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक बॉडीज पे, जो कि आया हुआ है गेट 2015 में भी, राइट, व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर मासेस सेम है तब तो आप ये जो एप्लीकेशन मैंने बताया डायरेक्टली यू कैन अप्लाई कि भाई वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है, डायरेक्शन उनका सेम है। बट अगर मासेस डिफरेंट है, व्हेन द मासेस आर डिफरेंट, देन यू हैव टू फॉर्म टू इक्वेशंस। कैसे बनाओगे दो इक्वेशन, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहली बात, अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी दिया हुआ है then you can apply conservation of momentum, m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash, also by using this particular thing, E की वैल्यू, E की वैल्यू वहां पे होती है 1, तो सिंस E की वैल्यू 1 होती है तो E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइड बाय v1 माइनस v2, यहां से भी एक इक्वेशन मिल सकती है आपको, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश, ठीक है। तो एक इक्वेशन हो गई ये। सेकंड इक्वेशन इज हाफ m1 v1 प्लस हाफ m2
V2 is equal to half m1 v1 dash plus half m2 v2 dash, ठीक है, जिसमें m1 m2 आर द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। तो एक इक्वेशन v1 v2 में वहां से मिल जाएगी आपको, एक इधर से मिल जाएगी ई से, ठीक है। यू कैन इजिली सॉल्व व्हाट विच एवर अननोन हैज बीन आस्क्ड। अगर दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भाई परफेक्टली लास्टिंग में वी हैव वन मोर इक्वेशन which is conservation of energy. But initially, always try to solve the questions from these two equations only, which is the perfectly, this is the conservation of momentum, and the other one is the conservation of, sorry, the value of कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। सो ये गेट 2015 में क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, ठीक है। सी दिस इज ऑल वी हैव इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस अबाउट इट। मैंने आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दी हैं, जो चीजें थोड़ा क्विकली पढ़ना था वी हैव स्टडीड दैट क्विकली आल्सो, ठीक है। नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी practicing, I'll be letting you practice few more questions, ठीक है, on work energy methods, and but till then just practice the question and go through this video thoroughly. Thank you for watching.